लोकल होस्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। सो एब्स्ट्रैक्ट में हम लोगों ने सिट्रोन तक का एग्जांपल लिया था, यानी कि यहाँ तक। हम लोग देखेंगे PHP मोर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एग्जांपल। और इसको हम लोग यहाँ से H2 कर देते हैं। So let's look at another example where the abstract method has an argument. So example के तौर पर हम यहाँ पर एक abstract class बना रहे हैं like parent class, और abstract protected function हम लोगों ने बनाया है prefix name, जिसके अंदर हम लोगों ने एक argument अपना पास किया है जो कि है name। क्लास बना रहे हैं, चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट क्लास को अपने अंदर, और पब्लिक फंक्शन हम लोगों ने बनाया प्रीफिक्स नेम, ठीक है। और उसमें हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं इफ नेम 2 टाइम्स इक्वल टू तुषार, तो प्रीफिक्स ऐड कर दो मिस्टर, एल्स इफ नेम 2 टाइम्स इक्वल टू तुषार, तो वहाँ पर मिस ऐड कर दो, और यहाँ पर एल्स प्रीफिक्स को हम लोग ब्लैंक रख रहे हैं। तो अगर मान लो कि वैल्यू नहीं है तो ब्लैंक हो जाए, अगर है तो उसका आगे प्रीफिक्स लग जाए। तो मैंने कहा रिटर्न माई नेम इज दिस, ठीक है, मिस्टर तुषार एंड यहाँ पर मिसेस तुषार, इस तरह से मैं यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये हुआ हमारा आर्ग्यूमेंट के साथ प्रीफिक्स हमने यहाँ पर डाला हुआ है। और लेट्स look at another example where the abstract method has an argument and the child class has 2 optional arguments that are not defined in the parent abstract method। तो parent method में नहीं होगा, लेकिन हम लोग child के अंदर देखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर हमने एक abstract class .php नाम से फाइल बनाया हुआ है, इसको हम लोग ओपन करेंगे, और यहाँ पर हमने अपना कुछ सेट किया, जैसे नेम, और यहाँ पर हमने एक बनाया सेपरेटर, और एक हमने बनाया यहाँ पर ग्रीट। ग्रीट पर हमने मेंशन किया यहाँ पर डियर, सेपरेटर में हमने लगाया डॉट, तो यहाँ हमने लिखा इफ नेम इज मिस्टर तुषार तो मिस्टर ऐड हो जाए, इफ नेम इज तुषार तो मिसेज ऐड हो जाए, और यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ग्रीट प्रीफिक्स सेपरेटर और नेम वेरिएबल को। तो ग्रीटिंग्स डियर लिखाएगा, प्रीफिक्स में डॉट आएगा, सेपरेटर्स में डॉट आएगा, प्रीफिक्स हमारा पूरा फंक्शन का नेम हो गया, ठीक है, जिसके आगे हम लोग ने यहाँ पर वेरिएबल में डेटा पास किया हुआ है। तो जब लोग इन सब चीज़ों को मिला के रन करेंगे यहाँ से abstract class .php को, तो आप यहाँ देखें डियर मिस्टर तुषार, डियर मिस तुषार, तो ये कैसे आ रहा है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरफेस। इंटरफेस क्या है और किस तरह से काम करता है, तो यहाँ से हम लोग इंटरफेस का एग्जाम्पल ओपन करेंगे। What are interfaces? Interfaces allow you to specify what methods a child should implement. For example, interface make it easy to use a variety of different classes in the same way. When one or more class use the same interface, it is referred to as polymorphism. Interfaces are declared with the interface keyword. तो जब हम लोग एक क्लास डिफाइन करते हैं तो उसके आगे हम लोग इंटरफेस कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर इसका कुछ सिंटेक्स चलता है, इंटरफेस क्लास, और इसके आगे हम लोग क्लास का नेम अपना डिफाइन करें, बाकी अपने पब्लिक फंक्शन वगैरह जो भी आप इसमें बनाना चाहते हैं वो अपना डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, डिफॉल्ट भी हो सकता है, और स्ट्रिंग मोड में भी हो सकता है। तो जैसे हमने 3 फंक्शन बनाया, डू समथिंग, अनदर फंक्शन एंड येट अनदर फंक्शन। सो PHP इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दोनों में क्या डिफरेंस है। इंटरफेस are similar to abstract class. The difference between interfaces and abstract classes are interfaces cannot have properties while abstract class can have. All interface methods must be public. इसमें हम लोग protected private हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ये सब by default आके public रहेंगे। While abstract class methods is public or protected. All methods in an interface are abstract
so they cannot be implemented in code, and the abstract keyword is not necessary. Classes can implement an interface while inheriting from another class at the same time. So PHP using interfaces. To implement an interface, a class must use the implement keyword. ठीक है, तो हमें implement का भी use करना है. A class that implements an interface must implement all of the interfaces methods. So example हमने यहाँ पर बनाया है अपना mu. तो from the example above यहाँ आते हैं और इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल किस तरह से काम कर रहा है. सो वी हैव वन एनिमल क्लास विद इंटरफेस एंड पब्लिक फंक्शन लाइक मेक साउंड. फिर हमने क्लास एक क्रिएट किया, हमने कैट इम्प्लीमेंट से हमने एनिमल को उसके अंदर, और पब्लिक फंक्शन हमने मेक साउंड को किया कॉल, और उसके अंदर हमने एको कराया म्याओ को. ठीक है, जो कि कैट की वॉइस है. और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं एनिमल इक्वल टू न्यू कैट, और एनिमल के अंदर हम लोग मेक साउंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं बेसिकली. तो मेथड है जो कि तो हमें एक रिटर्न आया यहाँ से ये वाला पार्ट. So from the example above, let's say that we would like to write software which manage a group of animals. There are actions that all of the animals can do, but each animal does it in its own way. Using interface, we can write some code which can work for all of the animals even if each animal behaves differently. So इसका एक एग्जाम्पल हमने बनाया है interface.php के अंदर. जैसा आप देखेंगे कैट, डॉग एंड माउस तीनों का इसमें अवेलेबल है. तो यहाँ पर ओपन करेंगे फाइल. यहाँ पर हम लोगों ने एक इंटरफेस बनाया एनिमल, पब्लिक फंक्शन मेक साउंड, और देन उसके अंदर हम लोगों ने 3 डिफरेंट क्लासेस यहाँ पर क्रिएट किए जिसके अंदर हमने मेथड्स मेक साउंड को कॉल किया और इन तीनों का वॉइस किया होगा वो हमने यहाँ पर पास ऑन किया है. नेक्स्ट हमने कैट इक्वल टू न्यू कैट, डॉग इक्वल टू न्यू डॉग एंड माउस इक्वल टू न्यू माउस, और तीनों को हमने एरे के अंदर कॉल किया एनिमल्स, और एनिमल्स को हम लोगों ने एज एनिमल कॉल करा के लूप कर दिया सो दैट कि तीनों का डेटा में वन गो में डिस्प्ले हो जाए. तो इस तरह से आप इंटरफेस को किसी में अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, बस ध्यान रखें कि इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ पब्लिक मेथड होता है, दूसरा मेथड आपका नहीं होता है. सो इस एग्जांपल को जरा समझेंगे कि इस तरह से इसने काम किया. तो बैक आते हैं यहाँ से. कैट, डॉग एंड माउस आर ऑल क्लासेस दैट इम्प्लीमेंट द एनिमल इंटरफेस, विच मीन्स दैट all of them are able to make a sound using the make sound method. Because of this, we can loop through all of the animals and tell them to make a sound even if don't know that type of animal each one is. Since the interface does not tell the classes how to implement the method, each animal can make a sound in its own way. So ये था आपका इंटरफेसेस, यानी कि एक बार कोई इंटरफेस अपना बना लो और डेटा को आप उसके अकॉर्डिंग रेंडर करा सकते हो. बात करेंगे ट्राइट्स क्या होते हैं पीएचपी के अंदर. सो यहाँ से हम लोग अपनी फाइल सेव करेंगे और टॉपिक नंबर हो जाएगा 10 पीएचपी ट्राइट्स, और यहाँ पर जाके हम लोग बनाएंगे पीएचपी ट्राइट्स. व्हाट आर ट्राइट्स? So PHP only supports single inheritance. A child class can inherit only from one single parent. So what if a class needs to inherit multiple behavior? Oop tries solve this problem. Tries are used to declare
methods that can be used in multiple classes. Types can have methods and abstract methods that can be used in multiple classes, and the methods can have any modifier, जो कि ऑलरेडी हमें पता है, public which is by default, private or protected. Threads are declared with thread keyword. इसका syntax %lt %gt और यहाँ लिखेंगे ट्रैड, यहाँ पे ट्रैड नेम जो भी आप रखना चाहें और जो भी आप कोड यहाँ लिखना चाहें. क्लास बॉर्डर और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पैडिंग x में लाइक 2, पैडिंग y में लाइक 3. यहाँ आएंगे, बैक करेंगे अपनी फाइल, रिफ्रेश करेंगे, ट्रैड्स ओपन करेंगे तो ये अपना इसका कुछ कोड रहने वाला है. सो नेक्स्ट लाइन, टू यूज thread in a class, use the use keyword. Syntax पैराग्राफ, उसको प्री टैग में डिफाइन कर लेंगे. कॉपी, सो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास नेम लाइक माई क्लास, एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूज ट्राइड नेम जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था. Next, let's look at an example. H3 example. यहाँ पर हम लोग जाके कुछ डिफाइन करेंगे PHP कोड, एंटर, और इसमें लोग लिखेंगे यहाँ से इस कोड को क्लोज. यहाँ लिखेंगे थ्रेड, मैसेज अपना बनाइए, यहाँ पर लिखिए पब्लिक फंक्शन लाइक msg1 कर्ली ब्रेसेस अपेंड एको, और यहाँ पर लोग लिख देते हैं दिस इज मैसेज 1, हम लोग लिख देते हैं. नेक्स्ट एक क्लास बना लेते हैं लाइक वेलकम, एंटर,
ये लिखेंगे यूज मैसेज 1. नेक्स्ट डॉलर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे न्यू वेलकम, और यहाँ पर लिखेंगे डॉलर ऑब्जेक्ट और इसमें डिफाइन करेंगे MSG 1. फाइल को करेंगे कंट्रोल एस, इसको रन करेंगे वेब ब्राउज़र में. तो आप देख सकते हैं दिस इज अ मैसेज 1. ये हमारा थ्रेड से काम चल रहा है. समझेंगे एग्जांपल किस तरह से वर्क कर रहे हैं. Here we declare one thread message 1. Then we create a class welcome. The class uses the thread and all the methods in the thread will be available in the class. If other classes need to use the message 1 function, simply use the message 1 thread in those classes. This reduce code duplication because there is no need to redeclare the same method over and over again. ठीक है, तो जितनी बार भी हमें कोई मैसेज लिखना होगा हम बेसिकली इसी मैसेज 1 को कॉल कराते रहेंगे और अपना मैसेज प्रिंट कराते रहेंगे. नेक्स्ट, अब हम लोग देखिए मल्टीपल थ्रेड्स को हम लोग किस तरह से हैंडल कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे HR और यहाँ पर लिखेंगे H2 PHP using multiple threads. Let's look at another example. यहाँ लिखेंगे H3 example file name multiple threads .php so एग्जाम्पल अपना करेंगे यहाँ से कॉपी और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाइए और इसको नेम दीजिए multiple threads.php. यहाँ लिखेंगे हम लोग HTML5 और यहाँ पर हम लोग अपने मेथड करेंगे कॉल. सो यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज है जिसको मैं कुछ डिफरेंट लिख देता हूँ. दिस इज अ मैसेज 1. हम यहाँ पर एक और मैसेज बना लेते हैं. कॉपी दिस एंड पेस्ट इट अगेन मैसेज 2 और यहाँ से हम लोग मैसेज 2 बना देते हैं. इसको लिखते हैं दिस इज
क्लास हमारे पास है वेलकम, जिसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं मैसेज वन। एक हम लोग क्लास बना रहे हैं अगेन, विच इज़ वेलकम टू। दिस इज़ वेलकम वन। अब वेलकम टू क्लास के अंदर मैसेज वन को कॉल किया है और वेलकम टू क्लास के अंदर हमने मैसेज टू को कॉल करना है। ठीक है, और किस कीवर्ड का यूज़ कर हम लोग यूज़ कर। अब इस ट्राइड को मैं टू वाले में भी यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं मैसेज वन को कॉपी करूँगा यहाँ से, कॉमा लगा के मैसेज टू को भी मैं अपेंड कर दूँगा। यानी कि एक फंक्शन जो है वो दोनों थ्रेड्स को यूज़ करो, एक फंक्शन एक ही को यूज़ कर रहा है। नाउ हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्ट न्यू वेलकम, ये अपना एज इट इज़ रहेगा। फिर हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे बी आर, लिखेंगे डॉलर एको, लिखिए एको, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे बी आर फॉर ब्रेक। अगेन हम लोग इसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ये वाला ऑब्जेक्ट वन हो गया, ये वाला ऑब्जेक्ट वन हो गया, यहाँ ये दूसरा बनाइए, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू, ये हो जाएगा न्यू वेलकम वन, ये हो जाएगा न्यू वेलकम टू, और यहाँ पर जाकर लिखेंगे मैसेज वन एंड मैसेज टू, लाइक दिस। तो अब आप देख सकते हैं कि हम दो मेथड्स एक साथ लाके अपनी अलग अलग क्लास में कॉल करा पाएंगे बहुत ईजीली। तो जाइए यहाँ पर, अब डिफाइन करिए रिफ्रेश एंड क्लिक हेयर। तो आप देख सकते हैं दिस इज अ मैसेज वन एंड दिस इज अनदर मैसेज। एक साथ हमने मल्टीपल को कॉल करा लिया वेरी इजीली। ठीक है, चलिए एग्जांपल को समझेंगे कि किस तरह से बेसिकली काम करता है। Here we declare two threads, message 1 and message 2. Then we create two class, welcome 1 and welcome 2. The first class welcome 1 uses the message 1 thread, and the second class welcome 2 uses both message 1 and message 2 threads. Multiple threads are separated by comma. Alright, तो ये है बेसिकली इनका वर्किंग। तो थ्रेड्स में आप एक ही के अंदर मल्टीपल पास करा सकते हैं वेरी इजीली विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। तो इससे क्या होगा, हमारा कोड का लेंथ जो होता है काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टैटिक मेथड्स की। स्टैटिक मेथड्स
Static methods can be called directly without creating an instance of the class first. Static methods are declared with the static keyword. So इसके लिए सिंटैक्स अपना कुछ रहता है, जैसे कि क्लास नेम, देन हम लोग इसमें डिफाइन करते हैं पब्लिक स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक मेथड, एंड इसके अंदर से हम लोग कोई भी अपना मैसेज पास कर सकते हैं, लाइक हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल, और ये आपका क्लोज हो जाता है. सो टू एक्सेस a static method, use the class name comma double colon like this and the method name. इसके सिंटैक्स अपना चलेगा, यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे क्लास नेम और इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे स्टैटिक मेथड. So let's look at an example. यहाँ ये देखिए लाइक क्लास ग्रीटिंग, और यहाँ लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक फंक्शन लाइक वेलकम कर्ली ब्रेसेस अपेंड, और यहाँ जाकर आप लिख दें वेलकम टू PHP. ये हमने इस तरह से डिफाइन कर देना है. नेक्स्ट इसको हम लोग कॉल करेंगे, तो क्लास से बाहर आइए, लिखेंगे आप कॉल स्टैटिक मेथड ग्रीटिंग वेलकम. बैक करेंगे इसको और रन करेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं वेलकम टू PHP हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है. H3 example explained. Here we declare a static method welcome, then we call the static method by using the class name double colon and the method name without creating an instance of the class first. PHP
static methods. A class can have both static and non-static methods. A static method can be accessed from a method in the same class using the self keyword and double colon example. We are going to copy this example and paste it here. Name is greeting2 and greeting2. So after the static function welcome, we are going to create one constructor which is public function underscore constructor, and here we define self and assign to welcome. और यहाँ पर हम लोग इसको डिफाइन करेंगे न्यू greeting 2. सो वेलकम ऑलरेडी हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है, तो आप यहाँ लिखेंगे वेलकम 1 वेलकम 1. ठीक है. सो इसके बारे में इसकी वर्किंग्स होती है. यहाँ पर आप देखिए कोई एक एरर हमें यहाँ पर दिखा रहा है अनडिफाइंड फंक्शन विच इज़ वेलकम 1. ठीक है. इसको ज़रा रन करिए फाइल को और आउटपुट में चेक करेंगे क्या इसका मेरे तक रिसीव हो रहा है. तो यहाँ में एक एरर है कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन वेलकम 1, जिसके समय इसने एक एरर थ्रो किया. तो मुझे ग्रीटिंग 2 पब्लिक स्टैटिक फंक्शन वेलकम 1 एको किया हमने ऐसे मैसेज को पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट, और यहाँ पर लिखा सेल्फ, दो कॉलम लगा के इसको कॉल करना है. सो हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी. यहाँ पर तो लिखा है यहाँ पर आपका वेलकम टू PHP अगेन, इस तरह से. सो यहाँ लिखेंगे स्टैटिक मेथड्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फ्रॉम मेथड्स इन अदर classes. To do this, the static method should public example. अपन यहाँ पर डिफाइन करेंगे क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज. अरे यार यहाँ लिखिए लाइक क्लास A पब्लिक स्टैटिक फंक्शन वेलकम अपेंड एको करेंगे यहाँ से मैसेज हेलो वर्ल्ड, और इसमें लोग जाके डिफाइन करेंगे. वेट करो, वेट अंदर जाओ. एक और क्लास डिफाइन करेंगे B, और इसके अंदर हम लोग ये पब्लिक मैसेज में डिफाइन करेंगे पब्लिक फंक्शन
हम लोग ए वेलकम। नेक्स्ट हम लोग क्या डिफाइन करेंगे इसके अंदर, डॉलर ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू बी, न्यू स्पेस बी। लिखिए डॉल एको डॉलर ऑब्जेक्ट मैसेज। इसको मैसेज रखो यहाँ पर, तुम्हारा ये एरर चला जाएगा। रन करेंगे इस एग्जाम्पल को, यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। तो हमें हेलो वर्ड यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। तो हमने ए को पास किया बी के अंदर और हमने बी को कॉल किया, तो हमारा इस तरह से सिंपली काम हो जाएगा। सो टू कॉल a static method from a child class, use the parent keyword inside the child class. Here the static method can be public or private या protected। प्राइवेट सेम क्लास में काम करता है, इसलिए हम लोग उसको यूज़ नहीं करें। प्रोटेक्टेड को हम लोग एक क्लास से दूसरी क्लास के अंदर कॉल करा सकते हैं। यहाँ जाए, डिफाइन करें। हमने अपना एक क्लास डिफाइन किया लाइक डोमेन, और यहाँ पर हम लोग इंस्टेड ऑफ पब्लिक यूज़ करें प्रोटेक्टेड स्टैटिक फंक्शन, और इसका नेम है गेट वेबसाइट नेम। और यहाँ से हम लोग अपनी वेबसाइट नेम डिफाइन कर देंगे लाइक india.com। यहाँ आएंगे और इसको हम लोग यहाँ से एको नहीं करेंगे, रिटर्न करेंगे, ठीक है। रिटर्न india.com। सेकेंड हम लोग क्लास बना रहे हैं विच इज डोमेन अरीना, extends डोमेन क्लास। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे पब्लिक डॉलर वेबसाइट नेम, और यहाँ हम लोग जाकर डिफाइन करेंगे पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर डॉलर this website name equal to parent get website name। now यहाँ पे लिखिए डोमेन अरीना इक्वल टू, हम यहाँ डिफाइन करेंगे न्यू डोमेन अरीना, और यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे एको डोमेन अरीना वेबसाइट नेम। सो अभी हमें ये रिटर्न होना चाहिए इसके अंदर। सो सेव करेंगे इसके यहाँ पर, रिफ्रेश करेंगे। सो एज यू कैन सी है आपकी वेबसाइट का नेम आपको रिटर्न आ रहा है इसमें। सो ये होते हैं हमारे स्टैटिक मेथड्स। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैटिक के साथ।